Hi everyone. Good afternoon. Welcome to another session with Learn फटाफट। तो आज के सेशन में हम क्लास 10 साइंस के सब्जेक्ट से चैप्टर करेंगे दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर और इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट करंट, magnetic field in a circular loop and solenoid। सो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है, द पैटर्न, द डायरेक्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम कैसे पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं बाय स्टडिंग द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस, है ना। और ये जो पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस है वो डिपेंड करता है ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। सो वी हैव थ्री मेन शेप्स टू डू। कौन से? एक है स्ट्रेट कंडक्टर, जो हमने पिछले सेशन में कवर किया था कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है। आई होप यू रिमेंबर कि स्ट्रेट कंडक्टर में द फील्ड लाइंस आर इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि वो ही कॉन्सेप्ट हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और आज हम देखेंगे कि फील्ड लाइंस इन अ सर्क्यूलर लूप, हाउ आर दे, एंड द थर्ड शेप व्हिच यू हैव इज ऑफ अ सोलेनॉइड। सो अगर आप सोच रहे हो कि चलो स्ट्रेट तो कंडक्टर समझ गए, सर्कुलर लूप भी समझ गए कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस, लूप होगा एक वायर का, ये हो गया सर्कुलर लूप। लेकिन ये सोलेनॉइड क्या है? सो डोंट वरी, आई विल शो यू व्हाट्स अ सोलेनॉइड एंड उसके थ्रू ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, व्हेन वी पास करंट, बेसिक क्या है, करंट पास होने पे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर, तो दैट वी आर स्टडिंग। सो इसमें से हम आज जो पढ़ेंगे वो है सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा मैं रिकैप कर देती हूँ जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, बिकॉज दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड इन अ circular loop. So magnetic field in a straight conductor, we had studied कि अगर मेरे पास एक straight conductor है और उसमें when I pass current, for example if the direction of the current is like this upwards, so we know that magnetic field will be produced around it. So this magnetic field around a straight conductor is in the form of concentric circles, ठीक है, this we had already seen। तो ये ऐसे ऐसे concentric circles के फॉर्म में होंगी magnetic field, and as the distance from the wire will increase, what will happen to this shape of the concentric circles? As the distance from the wire increases, ये जो circles हैं ये और भी दूर होते जाएंगे एक दूसरे से, है ना। This was one main thing, and second main thing which we saw कि direction of magnetic field क्या है। So direction of magnetic field के लिए I had told you that we can use the right hand thumb rule, or we can also call it the, which other name can we give it? कौन सा दूसरा नाम दिया था मैंने? Yes, so we can also call it the Maxwell's corkscrew rule, and ये दोनों ही रूल आप सर्कुलर लूप में भी हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो डोंट थिंक दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये सिर्फ ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए था, अब सर्कुलर के लिए नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। तो हियर व्हाट डिड वी लर्न कि इफ आई एम इमेजिनिंग, राइट हैंड थंब रूल ले लो या ये, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस वन। रिकैप कि अगर मैंने राइट हैंड में कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर होल्ड किया है, and if the direction of current is upwards, the thumb is pointing in the upward direction, so my curled fingers will show me the direction of the magnetic field from this point till the fingertips। तो ये direction जो है, which I can see, this is the anti-clockwise direction। okay, so this is the direction of the conductor। okay,
तो यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है. Okay, so up is this, and if it is down, if the current is downward direction, then this will be clockwise. Okay, so let's continue with our circular loop now. अब हम इसका वीडियो देखेंगे and let's understand the magnetic field produced in a circular loop. So what is a circular loop? Due to a 1 minute. Yeah. So magnetic field due to current through a circular loop. सर्कुलर लूप इज नथिंग. क्या होता है ये? एक हमने स्ट्रेट कंडक्टर तो पढ़ा ही है. अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर को 1 मिनट. दिस इज ओके. सो इन अ स्ट्रेट कंडक्टर को या कोई भी वायर को इफ आई जस्ट बेंड इट एंड आई मेक इट अ लूप, तो वो हो जाता है सर्कुलर लूप. So it may be like this. तो ये जो दिख रहा है हमें, I'll show you this one. See, this is a circular conductor here. तो वायर को मैंने सर्कुलर शेप में सिर्फ बेंड कर दिया है, तो ये बन जाएगा एक सर्कुलर कंडक्टर. और इसको हमने कनेक्ट कर दिया टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. So what will I get? I will get a current carrying circular loop. And whenever there is a current carrying circular loop, yeah, whenever there is a current carrying conductor, magnetic field तो इसमें produce होनी है ना? So what will be the pattern of the magnetic field in this case? So it is nothing very different. अगर हम consider करें circular loop को, हर point पे, at every point it is acting like a, for example, at this point it is like a straight conductor at this point. So you can just find the direction of current at this point and you will know what is the direction of magnetic field here. Similarly, इस part को you can consider another straight conductor. यहाँ पे you can, so circular loop में भी direction या pattern of magnetic field is, pattern is same. It is again in concentric circles only. Okay, so it will be like this. Let me draw a little bigger one. थोड़ा सा इसको मैं loop बना के दिखाती हूँ आपको. So if I have something like this circular loop, मैंने वायर को सिर्फ बेंड किया, तो इसमें हर पॉइंट पे there is the magnetic field in the circular direction, जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़ा है. ओके, so what will happen, ये जो है and डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे? So again we will be using the same rules जो हमने right hand thumb rule या फिर Maxwell's corkscrew rule पढ़ा था. So let us see a little further in this video. ये देखो circular conductor है and ये कनेक्ट कर दिया बैटरी को, तो current will flow through this conductor पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना? अब ये देखो करंट हमेशा फ्लो करता है. आपको सबसे पहले करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है. So मैं आपको एरो से दिखाती हूँ where the current is flowing. If I consider this point, यहाँ पे current is flowing in this direction, right? यहाँ पे it is flowing in this direction. तो ये जो है loop में current is flowing in a anti-clockwise direction, and at every point, now if I name this one as point 1, okay, so at point 1 यहाँ पे if I consider this is a straight conductor, तो मेरा करंट देखो किस तरफ जा रहा है. यू कैन यूज योर सेम राइट हैंड थंब रूल. वायर इज द कंडक्टर इज इन आवर राइट हैंड एंड द थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर. सो होल्ड इट लाइक दिस एंड आई नो आपको कैसे दिख रहा है. आई थिंक यू कैन सी अ मिरर इमेज. सो यू होल्ड इट जैसे आपको सामने दिखेगा. Now I can see it towards the right here. Okay, this thumb is pointing in the direction of the current. So मेरी जो magnetic field है that I can see is in this direction. Which direction? It is in the anti-clockwise direction. That's why यहाँ पे ये देखो ये जो है ये हमें दिख रहा है anti-clockwise direction. Similarly, if I consider this point, यहाँ पे current जा रहा है इस तरफ, तो here the magnetic field
you can find out again and you will get here it in the clockwise direction. ठीक है, so like this you can find the direction and ये बहुत सारे जो concentric circles हैं ये मिलके ही ऐसे field बन जाती है circular loop में. So let us see here pattern of the magnetic field lines. Experimentally how can we find it? तो एक जैसे हमने straight conductor के लिए experiment किया था, a similar setup we can do with the circular loop. What will we do in that? Instead of a straight conductor, we will have to take a circular loop. And ये है वो cardboard. So we know what is the condition here. कि ये जो cardboard है, this must be perpendicular to the plane of the wire, to the plane of the circular loop. So if this is my circular loop, so my cardboard should be like this, perpendicular. Okay. So this is the setup and बाकी तो we have to have the same thing. Battery होगी, connect करेंगे and on this cardboard we will be sprinkling some iron filings. So here we have connected the circuit, completed the circuit and we can see the current is flowing from positive to negative direction. अब इस cardboard पे iron filing sprinkle कर देंगे and we will tap it. Okay, so once we tap it, one minute. Once we tap the cardboard, तो वो iron filings arrange कर लेंगे अपने आप को in the pattern of the magnetic field. So we will be able to see again, as I told you, ये जो है concentric circles ही मिलेंगे क्योंकि every point on the circular loop is nothing but a straight conductor. Okay, so we will get concentric circles as usual and direction हम find कर लेंगे. Again let me show you at this point. See this point I'm going to just enlarge here. ये point पे if I consider it's a straight conductor and current यहाँ पे flow कर रहा है anti clockwise, तो इस point पे ये होगा downward direction में. So you use your right hand thumb rule and you will put the thumb in the downward direction with the conductor in your right hand. And you will get the pattern of magnetic field lines. So what we can see here, these are the clockwise lines, right? Clockwise. So from the points from the place where the fingers start to the tip of the finger. Okay, वहां तक. वो हो गया clockwise. तो like this, ये देखो, these are the clockwise circles and similarly if I take another point here, ये जो right side में है point B पे देखो same rule apply करो and check. So I will get here point B को अगर मैं दिखाऊं as a straight conductor, यहाँ पे current है in the upward direction. So I will hold my conductor in the right hand and thumb will point in the direction of current and my curled fingers will show direction of the magnetic field जो है from here to here anti-clockwise. Okay, तो यहाँ पे ये देखो this is anti-clockwise field. So this is very clear to you. तो आपको हर point if they have asked you the directions clockwise or anti-clockwise, then you can find using the right hand thumb rule or the corkscrew rule. But again, one more thing we are going to see here. What will that be? अब concentric circles तो हैं. Now we also know that more the distance from the wire, when the distance from the wire increases, what happens to the concentric circles? Last session में हमने क्या देखा था कि ये जो concentric circles हैं, they will become bigger and bigger and they will go further away from each other. The circles will go farther away from each other, farther apart, and they will become bigger and bigger
तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, अगर पॉइंट ए ये है, ओके, एंड पॉइंट बी है ये, सो पॉइंट ए पहले तो छोटे छोटे रेडियस होंगे like this, and then it is going to become bigger and bigger, and finally here you see, तो at the center अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन देखें तो हमें ऐसे लगेगा कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ओके, तो एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों दिखती है? बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सर्कल, क्योंकि डिस्टेंस उसका वायर से, वायर तो पॉइंट ए पे है, मोर द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर बिगर इज द सर्कल ना, तो ये पार्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी यहाँ पे मार्क करूं, मेरी वायर का सर्कुलर लूप का एक एंड यहाँ पे है, सो अगेन हियर आई विल गेट बिगर एंड बिगर, तो here if you see this will almost appear like a straight line, and that's why we say at the center of a circular loop the magnetic field line appears to be straight. ठीक है, is this clear? So ये एक important observation है for circular loop, जो हमने straight conductor में नहीं देखी थी, क्योंकि वो straight conductor था, वो loop नहीं था. But in the loop, we will say that the center of the loop, we will see the biggest circle which will appear as a straight line. And why is that difference? Difference is because, 1 minute, yeah. Difference is because more the distance from the wire, bigger will be the circle, yeah, weaker is the magnetic field. Okay. So now that is one very important observation. इसमें second main point you have to remember here is more will be the number of turns. Okay, if you have a circular loop, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे सर्कुलर लूप में उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस you will also see in solenoid when we do solenoid, ये तब ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। And let's see another thing now, direction of the magnetic field lines. So magnetic field lines का direction हम कैसे find करेंगे? That I've already shown you, either by this Maxwell's corkscrew rule or else, okay, so I hope you remember what is the corkscrew rule. See, for example, if you're trying to put this corkscrew rule in the downward direction, which is, तो ये जो डायरेक्शन जिसमें कॉर्कस्क्रू जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, तो करंट डाउनवर्ड है तो हमें घुमाना पड़ता है क्लॉकवाइज, ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज, सो दैट्स द कॉर्कस्क्रू रूल, एंड सेम थिंग हमने ये भी पढ़ा है, सेम ऑब्जर्वेशन वी कैन अराइव एट if you use right hand thumb rule also. So if you have any confusion in these rules, so please watch my previous session, उसमें मैंने और भी explain किया था about these rules. Okay, now what about the strength of the magnetic field? We already know कि more will be the current, more will be the strength, and lesser will be the current, less will be the magnetic strength. लेकिन also you will also add here, more will be the number of turns, more will be the magnetic field strength. यानी सर्कुलर लूप्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन also one more thing, let's see here. So magnetic field ये yeah, this is more concentrated inside the loop. If you see the pattern, magnetic field lines, ये कैसे मालूम पड़ता है हमें? हमें ये मालूम है कि when we had studied first session में the properties of magnetic field lines, उसमें से what was one property? Closer the field lines, stronger the field, right? Closer the field lines, stronger the magnetic field. So in a circular loop,
when we see the pattern of magnetic fields. So inside the loop, do you see the field lines closer or outside the loop? तो inside the loop ये field lines जो हैं ज्यादा एक दूसरे के पास हैं. They appear to be more crowded inside the loop than outside, and that is why we will say that हमेशा circular loop में inside the loop the field will be more stronger, magnetic field will be stronger than it is outside the loop. So please remember this observation, very important. ओके एंड यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी. वेट लेट मी शो यू द पोलैरिटी. हियर यू कैन ऑल्सो सी द पोलैरिटी. तो पोलैरिटी वी कैन सी, लेट मी मार्क द एंड्स हियर. अगर ये है लूप का फेस ए एंड दिस इज फेस बी. ओके, so what can we see here? यहाँ पे polarity. Polarity means what? Polarity means north pole and south pole. अगर आपको ये find करना है circular loop में, then how will we find it? So by seeing the pattern here in the diagram we can see. देख के तो हमको मालूम पड़ जाएगा. क्या मालूम पड़ जाएगा? We had already studied what is another property of magnetic field lines, that they emerge. Field lines emerge from which pole? Emerge from the north, and they merge into the south pole. है ना? They originate from the north pole, means they appear to come out from the north pole. So if you see in this figure you will see कि इस फेस से जो मैंने A मार्क किया है, ओके, यानी कि फ्रंट फेस, हाँ, और एक होगा पीछे वाला फेस ऑफ द लूप. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द लूप, एक ये फेस होगा और एक होगा ये फेस. ओके, दीज आर द टू फेसेस ऑफ द लूप. सो इफ आई कंसिडर दिस ए फेस, यू कैन सी कि यहाँ से द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑल कमिंग आउटवर्ड, है ना? ऑल आर कमिंग आउटवर्ड. यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द एरो, इट इज लाइक दिस. एंड इफ आई कंसिडर दिस अदर फेस जो साउथ फेस है, यहाँ पे all the lines are appear to merge, enter, they are entering the loop at this face. तो जहां से they emerge, that is obviously the north face, and where they merge, that is the south face. Okay, I hope diagram में से आपको समझ में आ रहा है. Otherwise you also have another way to remember this or find it out. तो वो कैसे करेंगे? There's a simple clock rule. I'll show you what is a clock rule. So clock rule में just by knowing the direction of the current, you can find the polarity. So let me draw here two loops, and let us take the direction of current in the first loop as anti-clockwise, and second loop में हमें ले लेती हूँ clockwise. When the direction is anti-clockwise, तो वो जो फेस होता है that is always north, and clockwise वाला हमेशा होगा south. ठीक है? Are you getting the point? इसमें होती है confusion होती है circular loop में to find the north pole and the south pole, but if you just remember this, at least ये जो current का direction है ये आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज है अगर करंट का डायरेक्शन लूप में, तो वो फेस जो है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द लूप, ओके, सर्कुलर लूप, एंड इफ आई एम सीइंग फ्रॉम दिस एंड, यहां से मुझे अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फॉर मी इट इज लुकिंग एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस फेस विल बी नॉर्थ एंड दिस फेस ऑफ द लूप विल बी द साउथ. ओके, लाइक इफ आई लुक फ्रॉम दैट साइड, then this will be north and this will be south. It depends कि हम कौन से एंड से उसको देख रहे हैं. ठीक है? So just to find the polarity पे कोई क्वेश्चन आता है क्या, तो you can apply the clock rule also, simple one. एंटी कोई भी एक याद रखो, या तो एंटी नॉर्थ है और क्लॉक साउथ है. Remember any one of them. Or you and at any point of the conductor you have to find the direction magnetic field.
So you can directly use the right hand thumb rule that you already know. Okay, so that's it for circular loop. Now let's see कि solenoid में ये क्या होता है. Now to understand the magnetic field through a solenoid, पहले तो हमें पढ़ना होगा कि what is a solenoid. So solenoid is not something very different of your. Only the name may be different, but see, this is what is a solenoid. क्या है ये? You just take a copper wire or any wire, insulated wire, and इसको ऐसे arrange कर दो loops में. Give it some turns, okay? And when you give it so many turns and arrange it in the form of a cylinder, cylindrical shape है इसका देखो, cylindrical shape like this. If I show you, ये देखो, this is in the shape of a cylinder. So then this shape will be known as a solenoid. Okay, so magnetic field in due to current, so this is nothing very different. अभी circular loop तो हमने देख ही लिया, तो ये एक सर्कुलर लूप है. अगर मैंने बहुत सारे सर्कुलर लूप्स, ओके, ये बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को अगर आप एक साथ विजुलाइज कर लो, देन इट विल बिकम लाइक अ सोलेनॉइड ओनली, राइट? सो सेम थिंग, जैसे हमने सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो यूज की थी वो विजुलाइज की थी, सिमिलरली फॉर सोलेनॉइड अब सर्कुलर लूप में हमने जो जो अप्लाई किया है, सेम थिंग वी कैन अप्लाई फॉर अ solenoid, because solenoid को हम कंसिडर करेंगे मेड अप ऑफ many circular loops. And only one more thing you can just remember, ये जो length है, length of the loop, length of the solenoid, length must be greater than its diameter. यानी कि ऐसे नहीं कि ये मैंने ये बना दिया, okay? So if I made like this, so this will not be a solenoid क्योंकि इसकी जो length है, this is not very great. I mean, और भी छोटा, ये तो solenoid हो गया, समझो मैं और भी इसको छोटा कर दूं. अगर मैंने दो ही टर्न दिए, फॉर एग्जाम्पल just if I consider from here to here this part, so this much only I can say is a solenoid na. So there is some, according to your book, we have to say that अगर length is greater than the diameter, then we will say कि वो है एक solenoid. You know what is length, right? Length is this full ये, और diameter क्या है? Let me show you in pink color. Diameter is from here to here. Okay. अब हमने ये तो देख लिया कि solenoid होता क्या है. तो solenoid में भी all the properties will be same, which you have already learned. So there are so many circular turns of the wire. And in again solenoid में if we pass current, obviously there will be magnetic field lines produced. So as I told you, solenoid is considered as made up of many circular loops. तो हर circular loop की जो magnetic field lines हैं, वो same direction में होंगी, because the current will be in the same direction. यहाँ पे देखो, current यहाँ से जा रहा है, मतलब ये first, ये देखो loop में, first loop में क्या direction में है? If I see from this side, okay, just see it from any one side. If I'm seeing it from side A, तो इस loop में current है in the clockwise direction. Again in my second loop, ये भी second loop में A से ही देखो, तो current is again in the clockwise direction. तो current हर loop में same direction में है, तो magnetic field अब clockwise है, तो magnetic field जो है वो भी हर लूप में सेम पैटर्न की होगी. तो वो सारी फील्ड्स जो हैं, when they just add together, the sum of all the individual magnetic fields of each turn, so that is how it will look like this, somewhat like this. Okay, so you may consider one more here. तो जैसे आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया ही है. So okay, now if you see the pattern of magnetic field lines, what will be observed कि this is similar to one pattern जो हमने पहले देखा है. So do you remember which pattern is that? Can you recap? So here we can see individual इसका, ये देखो, ये है very similar to what we have seen about a bar magnet. And obviously a bar magnet है,
So this is also a sort of a magnet only. ये जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड से करंट पास हो रहा है and the magnetic field is produced, so this solenoid is also almost acting like a bar magnet. So अगर ये भी एक मैग्नेट है तो इसकी भी पोलैरिटी होगी, तो सोलेनॉइड में आप पोलैरिटी कैसे फाइंड करोगे? So let me show you 2 points here. Let me show you 1 minute. First let us see इसमें आगे दिखाया है अगर तो I'll show you. Yeah. So before this, let us mark P and Q. Okay. P and Q अगर यहाँ पे है तो मैं ये जो NP है, this one will be north or Q will be north. How will we find the polarity here? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, they give you some diagrams and especially you know now ऑनलाइन मोड जब से शुरू हुआ है तो बहुत application based questions have increased a lot. Mostly you will have diagram based questions where they are going to test your understanding कि कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम नॉर्थ मतलब पोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे. ये जो NP है, ये NP से we can see that these magnetic field the lines all ये है, ये NP है, यहाँ से all the lines appear to come out, right? And if I see Q, here all the lines are entering in. तो when they are emerging, तो वो कौन सा होता है हमेशा? That end is obviously the north pole, right? North pole, and this end will be the south pole. ये हमें दिखाता है polarity कैसे हम find करेंगे. Okay, but again now you may think कि चलो ये अगर तो ऐसा डायग्राम दिया होगा, then you know which one is north and which is south. But what if they have not given you the direction of magnetic field lines? Then how will you find the polarity? North है कि south है? So yes, उसका भी आंसर है. So we don't need the direction of magnetic field lines. We only need the direction of current. Okay, current के direction से magnetic field lines का direction हम अपने आप देख सकते हैं. देखो, अब circular loop में you remember the clock rule? What was the clock rule? So clock rule में we have seen, let me show you again, कि loop में when the current is anti-clockwise, then that face is the north pole and clockwise होगा तो south pole, है ना? तो if I see this first loop, let me show you, ये पहला loop यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस loop में current किस direction में है? Let's see from here to here. So this loop direction is one. This is the second loop. So first loop में direction है clockwise. Okay. If I see from this end, अब ये depend होता है कि कहाँ से देख रहे हैं. If I see from this end, then this is my loop. This is my loop. This is my one loop. And here the current is in this direction. Okay. But if I see from here, then it appears to be anti-clockwise. And अगर ये यहाँ पे anti-clockwise होगा, तो obviously then this pole you will get anti-clockwise में north है. So this one will be north and this one will be south. Okay. I hope you understood how you will find it. If you have any doubt in understanding के polarity कैसे find करनी है solenoid की, तो हम एक और session करेंगे और उसमें हम direction बताएंगे कि कैसे करना है. So just write to me in the comment section whatever the difficulty is. And we have to remember characteristics जो याद रखने हैं solenoid के लिए, the pattern of magnetic field lines is very similar to that of a bar magnet. ये एक property हो गई. What is the second property we have to remember? Second है कि if you observe ये solenoid के अंदर in this region, how are the magnetic field lines? All the magnetic field lines are almost parallel to each other. Within the solenoid, all the field lines appear parallel to each other.
So what does this indicate about the magnetic field? If the magnetic field lines are parallel to each other, यानी कि equidistant हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि the magnetic field there is how it is uniform. So this is one important second characteristic which you have to remember for solenoid. And using this property, using this characteristic, solenoid is used to magnetize. अब इसके अंदर अगर मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल या सॉफ्ट आयरन या स्टील रख दूं तो I can magnetize that also. So what is that called? That will be like I'm creating a temporary magnet. And because I'm using electricity, electric current to do that, that's why it will be known as an electromagnet. So this uniform magnetic field within the solenoid can be used to magnetize any material like steel. I mean magnetic, not any other material. Any material like steel or iron, magnetic materials. And they will become an electromagnet. Okay, chalo. Ab, I hope the concepts are very clear. Ab concept clear ho gaya, so we can now do the question answers. Fatapat, we'll do some easy quiz questions. 1 minute. Let's start the quiz from here. And yeah, this is the first question. The magnetic field inside the solenoid is. So, क्या लगता है आपको आंसर? A, B, C, D. You can give the names yourself. और देखो, what is the correct answer here? Magnetic field inside a solenoid is uniform. Not ये अभी मैंने बताया था that inside the solenoid the parallel lines are there. Magnetic field lines parallel होती है, which indicate that the field is uniform. Okay, let's see the second one. Which of the following is true about the solenoids? There is no magnetic field inside the solenoid. ये तो बिल्कुल true नहीं है. Magnetic field inside it is sum of the individual magnetic fields produced by each turn. ये तो true है. Pattern are not similar. This is not true. Second option is correct here. Right? Let's move on to the third question. A solenoid is wire having number of turns, a straight insulated wire, curved wire, yeah, no. Obviously wire having a number of turns. Okay, that is called a solenoid. Then let's see another one. Jaldi jaldi. In case of a circular loop carrying current, strength of magnetic field is. Circular loop में जो strength of magnetic field है वो कैसी होती है? Is it constant everywhere? What did we see in a circular loop? Okay, so something like this. So is it constant everywhere? Stronger inside the loop? Yes, stronger inside the loop is right क्योंकि यहाँ पे लाइन सबसे ज्यादा है. So we will say this. Weaker inside the loop is wrong. Stronger inside the loop is sahi jawab. And let's see the next question. And try to answer this one now. Direction of the field lines produced by a circular current carrying conductor can be found by which rule? Corkscrew rule, right hand thumb rule, both of these or none of these. So we can use both of them to find the direction. That is the right answer. And ये आ गया last question for today's session. State the pattern of magnetic lines for current carrying circular conductor. What is the pattern of lines? The magnetic field lines will be concentric circles to any point. At the center, the field lines appear straight. Both of these are none of these. Both these options are right. तो हम लिखेंगे both of these क्योंकि center of the loop में we have seen कि वो concentric circles they become so big कि वो center of the line at the center of the loop it looks like a straight line. Okay, so this was it for today's session. And with this, we complete this topic of magnetic fields in a circular loop and a solenoid. So I hope the topic is clear. And if it is clear, then please like the video and share it with your friends.
And for live sessions for class 10, we have live sessions daily at 3 p.m. and daily at 2 p.m. for class 9. Okay, so thank you for watching once again and take very good care of yourself. See you in the next session. Bye bye.